now you can start recording. Good. Sure. So see, degrees of freedom. So every independent possibility of motion of molecule is called degree of freedom. एक molecule है तो वो कैसे मूव कर सकता है? What are the different options? That will be called degree of freedom. Now सबसे simple बात समझो, एक simple molecule है. So when we study 11th standard chapter 3, 4, motion in 1 dimension and motion in 2 dimensions, motion 3 dimensions. Our basic concept is that a particle can move along x-axis or y or z. So याद करो तो आपको समझाया होगा 3 mutually perpendicular पेन रख के 3 mutually perpendicular पेन रख के या फिर इस तरह से फिंगर थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख के अगर एक एक्स एक्सिस है तो y है तो तीसरा z, याद आ गया? तो सेम थिंग हियर, these are 3 mutually perpendicular directions, x axis, y axis, z axis, x axis, y axis, z axis. So x is perpendicular to y and y is perpendicular to z. So mutually perpendicular x, y, z. But this is true only for monoatomic molecule. Monoatomic molecule जिसमें आते हैं inert gases, helium, neon, argon, xenon, वो सब inert है, उसमें ही ये वैलिड होगा. क्लियर? कंफर्म प्लीज. सर बोलो. Yes, all of you, please ask your doubt if you have any. Otherwise, we proceed further. Go ahead. Yes, please. Yes, please. There is nobody asking doubt, so we go ahead. Our regular person is not there for doubt. That's great, sir. We go ahead. यति सर, कोई डाउट हो इन्हें हैंड रेज करे तो अनम्यूट करो ना. ओके सर. Anybody having doubt? सर यश बलदानिया जी ने अनम्यूट कर दो. सर हम्म. સર આ તમે હમણાં બોલ્યા કે ઇનર્ટ ગેસીસ માટે તો આનું કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન ખરું? એ લોકો નોન રિએક્ટિવ છે એટલા માટે ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ? એક્ઝેક્ટલી, એટલે એની ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ 3 થાય. એટલે સર બીજા બધા મોલિક્યુલ્સ અલગ અલગ હોય આખી? હા, આગળ ભણીએ એટલે આવશે જ. યસ. Now, anybody else having doubt? You consider diatomic molecule, but in that you consider rigid rotator. Rigid rotator means there are 2 molecules, there are 2 atoms in a molecule. There are 2 atoms that form a molecule, but their axis, the joining, they will be same. It will be fixed. So if you consider, it's like dumbbell shape. Easily, see, you consider one molecule over here. This is the axis, and you consider another molecule over here. Then these 2 molecules, they are free to move about axis which is perpendicular to them. So एक axis ऐसा होगा और एक axis ऐसा होगा.
सो दैट मीन्स कि वो 3 जो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम थे वो तो रहेंगे ही, बट उसके साथ में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। वो कैसे? तो देखो ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन है मेरे हाथ में, इस एंड पर एक मॉलिक्यूल है, दूसरे एंड पर दूसरा मॉलिक्यूल है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। अब ये अगर इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस है तो दिस पेन कैन बी रोटेटेड लाइक दिस। समझ पड़े छे? और रोटेट कराए, एंड देन अदर पॉसिबिलिटी इज कि सेम वे रखते हुए ऐसा रोटेट करो। So the other simple hint would be if you consider this intermolecular axis as y-axis, then the other two perpendicular would be x and z rotation के लिए. So translational motion के 3 degree of freedom and rotational motion के 2 degree of freedom. So in this case total 5 हो जाएंगे. Visualize થાય છે કે ફરી સમજાવું? Tell me frankly, so I'll proceed accordingly. ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन। देखो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इधर एक एक्सिस है, इधर एक मॉलिक्यूल, इधर दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक्स एक्सिस पे जा सकता है, दैट इज वन मोशन, दैट इज लीनियर मोशन। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट वाई एक्सिस पे जा सकता है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जेड एक्सिस पे जा सकता है। सो इस तरह से ट्रांसलेशनल यानी लीनियर मोशन में 3 केसेस हुए। आ खबर पड़ी गई? ट्रांसलेशनल यानी लीनियर में 3 टाइप हो गई, वो पता चला। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के आजू बाजू घूम सकता है। सो आओ और एल्स આવી રીતે તમને નવરાત્રીમાં અમુક લોકો ખબર પેલા દાંડિયા ફેરવે, યાદ છે? આંગળીમાં આમ દાંડિયા ફેરવે, તો ઘણા લોકો હોરિઝોન્ટલી ફેરવે, ઘણા લોકો વર્ટિકલી ફેરવે, એ યાદ કરો। Got the concept clear, all of you? Yes, please. सो इंटर एटॉमिक एक्सिस होगा, उसके परपेंडिकुलर 2 एक्सिस जो होंगे वहां पे रोटेशन का स्कोप होगा। सो दैट विल मेक 2 मोर स्कोप ऑफ मोशन, एक दोनों रोटेशनल मोशन के स्कोप होंगे। सो दे आर कॉल्ड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले जो 3 थे वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, ये हो गया रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? सो 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, सो दैट मेक्स इट टोटल 5। इसमें किसी को डाउट? नो सर। સર थैंक गॉड। बोल। સર એટલે તમે પેલું જે સમજાયું પેલું ડમ્બલ શેપમાં જ્યારે હોય ત્યારે આગળ પાછળ અને એટલે લિનિયર મોશન જે કરે એમાં 3 ટ્રાન્સલેશનલ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ થયું। हाँ, लीनियर मोशन, लीनियर माटेनो corresponding word છે ट्रांसलेशन। હા So if it moves along x, along y, along z, that is translation or linear. યસ સર And સર फिर and then intermolecular axis जो होगा, intermolecular axis, यस उसके perpendicular जो 2 axis होगी उसके about move करेगा, तो that will be 2 more degrees. So that will हाँ, make sir. 3 plus 2 5. यस સર ક્લિયર સર। Fine. नेक्स्ट, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। पहले क्या था? रिजिड रोटेटर था। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल है बट विद वाइब्रेशन है। तो एग्जांपल वुड बी HF एंड HCl। पहले जो एग्जांपल थे उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन,
Student, confirm this, then we can proceed further. At least मुझे 10 लोगों का confirmation चाहिए. તો સર बोलो. સર આ જે ડાયાટોમિક મોલિક્યુલ વિથ વાઇબ્રેશન હોય તો સર એમાં જે એક્સ્ટ્રા 2 આવ્યું એટલે 7 થયું તો સર એ 2 એક્સ્ટ્રા કેમ આવ્યું એ 7 થયું ને એ ખબર ના પડી સર. બટ એ વાઇબ્રેશન ના મોડ આવે. પહેલા 3 છે ટ્રાન્સલેશનલ મોશન ના મોડ છે, 2 રોટેશન ના મોડ છે. તો corresponding to vibration there are 2 modes, so that will be making it total 3 plus 2 plus 2 7. હવે સમજ પડે? સર આ પેલું ડાયટોમિક મોલિક્યુલ વાળું છે ને સમજાવ ને એમાં ખબર નહીં પડતી પેલું. કોને ડાઉટ પૂછ્યો? Whose doubt is it? I'll answer it accordingly. Yes, please. बोलो, डाउट किसका है? संभव सर. Okay, fine. So see, pay attention here. सबसे पहले तो मोनोएटमिक हो कि डायटमिक हो, कोई भी हो, this scope of motion is always there along x, along y and along z. आ तो समझ पड़ रहा है? Yes or no? So ये तो सबके लिए आएगा, मोनोएटमिक, डायटमिक सबके लिए. So these 3 degrees of freedom ट्रांसलेशनल वाले वो सबके लिए होते हैं. एंड इसमें ये मोनोएटमिक मॉलिक्यूल ये तो होंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, ज़ेनॉन के लिए. इज दिस पार्ट क्लियर? Now we think of another diatomic molecule. Diatomic molecule means 2 molecules, and this is the intermolecular axis. Molecule 1, molecule 2, and this is the intermolecular axis. तो एक उसका perpendicular axis होगा ये, एक perpendicular axis ऐसा आएगा और दूसरा perpendicular axis ऐसा आएगा. So it can move, it can have rotation. Now we are talking about rotation. It can have rotation about this axis also, and it can have rotation about this axis also. So वो तो है ही 3 linear motion वाले, आम जवाए, औ जवाए, ये तो બધું ખરું જ. So linear motion वाले 3 cases वो तो है ही. But apart from that, ये 2 rotation वाले cases आ गए. तो rotation वाले 2 cases आ गए, तो that will make 3 plus 2 5. Is that clear now? But this is a rigid rotator जिसमें molecules है वो अपनी जगह पर fix रहेंगे. They don't change their position. Molecules don't change their position with respect to vibration. They change only with respect to rotation or linear motion. उस situation में rigid है rotator means vibrations are not allowed. So 5 degree of freedom. But the moment you say diatomic molecule है और जिसमें vibrations allowed है, तो example would be HF and HCl, तो वो 3 plus 2 5 तो रहेंगे, but plus 2 vibration वाले रहेंगे. वो मैं draw करके नहीं दिखा सकता, वो आपको याद करना है कि corresponding to vibration there will be 2 degrees of motion, so that will make it total 3 plus 2 5 plus 2 7. Confirm it please. हाँ, actually interatomic axis क्या है बेटा? It's right. Intermolecular नहीं, interatomic axis. It is absolutely right. मेरी बोलने में गलती हो गई, क्योंकि 2 एटम को ज्वाइन करने वाला एक्सिस है ना. So it is interatomic axis. Absolutely perfect. मॉलिक्यूल के अंदर मगर 2 एटम को ज्वाइन करने वाला एक्सिस. So it will be interatomic axis. It was my slip of tongue. Yes please. बोलो. Now clear? સર हाँ बोलो. સર તમે પેલું જે ડાયાટમિક મોલિક્યુલ છે તો એમાં તમે પેલું રિમૂવ કર્યું હતું ને કંઈક? ના મેં કશું રિમૂવ નહીં કર્યું. એવું ક્યાં આવ્યું? ના, સર. હા સર, પેલું ડાયાટમિક રિજિડ રોટેટર લખ્યું છે ને તો ત્યાં O2 પછી પેલું K2 રિમૂવ કર્યું હતું. हाँ 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 हाँ. મને એવું લાગે તું પૂછે મોલિક્યુલ માંથી રિમૂવ કર્યું. મેં મોલિક્યુલ માંથી ક્યાં કશું રિમૂવ કર્યું?
Sir, बोलो. sir, two different directions perpendicular to interatomic करना. इंटर एटॉमिक कंफर्म. हाँ, okay. तो बोलती मराठी मॉलिक्युलर बोलायचं. अच्छा, यस, गो अहेड. हाउ कैन इट बी इंटरमॉलिक्यूलर? આપણે એક જ મોલેક્યુલની વાત કરીએ છીએ, તમે लॉजिकली જુઓ ને, हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर के 2 एटम है, वो कौन सा होगा? तो इंटर एटॉमिक ही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट. यस, गोइंग फर्दर. सो सी, यहाँ पे भी करेक्शन है. ये वर्ड डिग्री होना चाहिए. આ જેની નોટ્સ છે ને એની અહીંયા બે મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. કદાચ એબસેન્ટ હોઈને કોઈની પાસેથી લખ્યું હોય તો ઓછું સાંભળ્યું એવું કંઈક હશે. यहाँ पे डिग्री आएगा. 1 degree corresponding to kinetic energy, another degree corresponding to potential energy. So make that change also. So vibration में जो 2 डिग्रीज हम लेते हैं, वाइब्रेशन में 2 डिग्री, उसमें से एक काइनेटिक एनर्जी का होगा करस्पॉन्डिंग और एक पोटेंशियल एनर्जी का करस्पॉन्डिंग होगा. आटलू तुम्हारे याद रखा. अंडरस्टूड? बोलो. સર બોલો. સર એટલે આનું કોઈ यतीश सर, બીજા કોઈનો અવાજ ના આવે જોજો. હા, યસ પ્લીઝ. હા, બોલો. સર આજે તમે કીધું ને કે 1 degree corresponding to kinetic and potential વાળું કેસ, તો એ કેસમાં મતલબ એનું કઈ એવું ડેરિવેશન ટાઈપ ઓફ છે મતલબ કશું જ નથી. આ ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું. હા. Then next, there is law of equipartition of energy. So यहाँ पे वो करेक्शन भूलना मत. डिग्री वर्ड आएगा, टेम्परेचर नहीं. Now law of equipartition of, what do you mean by equi and partition? बस ये मीनिंग आउट है, लॉ खबर पड़ी है. Law of equipartition of energy states that the total energy of molecule in equilibrium is equally shared in all possible energy modes, that is each degree of freedom, with each degree having energy equal to half kBT. So energy of each mode will be half kBT. So अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, रिजिड रोटेटर, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. और अगर विथ वाइब्रेशन होगा तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. तो जो भी होगा, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का, हर एक मोड का हाफ kBT एनर्जी होगा. हाफ kBT. सो मोनोएटॉमिक में 3 पार्ट होंगे, डायटॉमिक में 5 पार्ट होंगे, रोटेटर रिजिड है तो, और अगर विथ वाइब्रेशन तो 7 पार्ट होंगे. और हर पार्ट का वैल्यू हाफ kBT होगा. इज दैट क्लियर? यहाँ पे प्रीवियस पेज पे जो था, इट विल बी क्लोरीन एंड फ्लोरीन, Cl2 and F2 लिखा है K2, वो गलत है. क्लियर? दैट्स गुड. चलो, सो देखो कितना सिंपल सा केस हो गया अगर आपको समझ में आ गया तो. अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो इट विल बी रिटन एज हाफ mvx स्क्वायर, हाफ mvy स्क्वायर, हाफ mvz स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, बट एक x का, एक y का, एक z का, और हर एक मोड का हाफ kBT, ऐसे 3 इक्वल. सो इट विल बी 3/2 kBT. बट इफ यू टॉक अबाउट डायटॉमिक रिजिड रोटर, O2 N2 F2 Cl2 H2,
So there will be 3 translational degree of freedom and 2 rotational degree of freedom. So it will be written as, see, वो ET तो सेम ही रहा, जो था वो सेम, उसमें no change. But now there will be ER, उसमें half I1 omega 1 square and half I2 omega 2 square, half I1 omega 1 square, half I2 omega 2 square. So एक degree of freedom एक एक्सिस के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, बट ये रोटेशनल मोशन है. सो आई और ओमेगा के फॉर्म में लिखा गया. 11th स्टैंडर्ड वाला रोटेशनल मोशन जो हमने सीखा है वही. So that will be half kbt each for 2 times, so it will be kbt. And when you talk about total, it will be translational plus rotational. So 3/2 kbt plus kbt, so that will be 5 kbt, 5/2 kbt. And when it is with vibration, so it will be HF HCl example. 3 translational के 2 rotational के degree same, but there will be 2 further degrees of motion, one for kinetic, one for rotational. So that will be vibrational cut. Total energy will be half ky square plus half m dy by dt square. Now dy by dt means velocity only. So half ky square वाला part is that is potential, and ये half mv square वाला part is that is kinetic. So एक part kinetic का हो गया, potential का हो गया. Again एक का value half kbt, so total 2 times. So 2 times half kbt. So that will be total kbt. And now total will be translational plus rotational plus vibration. So 3/2 kbt plus kbt plus kbt. So it is 7/2 kbt. सबको समझ में आया? है बहुत easy, but आपका कंडीशन एक ही अप्लाई होता है कि जागता रहे वक्त बस, जो कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है. સર बोलो. સર આજે ડાયાટોમિક મોલિક્યુલમાં ટ્રાન્સલેશનલ અને રોટેશનલ બંને આપ્યું છે, એટલે એ એક સાથે બંને મોશન પરફોર્મ કરશે. ના એક સાથે તો એ બની બી શકે, પણ એક સાથે જો જરૂરી નથી. વી આર કન્સિડરિંગ પોસિબિલિટી ઓફ મોશન. જો કોઈ માણસ સીધો સીધો ચાલતો જાય, કોઈ માણસ સીધો સીધો ચાલતો જાય, that is one scope. Second scope, એ આવો સીધો સીધો ચાલતો જાય ત્યારે પોતાની જગ્યામાં ગોળ ગોળ ફરતો બી જાય. આવું થાય, હા સર. પણ એવું કરે એવું જરૂરી છે? So હા it's a સર. possibility, and we are considering possibility. So And every independent possibility of motion is degree of freedom. So what are the different possibilities? એ આપણે જોવાનું, that we have to count. Fine. અને સર આજે જે પેલું ઇક્વી પાર્ટીશન વાળો કેસ છે ને, તો એ Total પેલું energy will be divided equally for all modes of motion. It is possibility of motion. Degree of freedom જેટલા હોય એટલા parts માં equally divide થશે. That's the simple law. Clear? હા સર. So monoatomic होगा तो 3 पार्ट होंगे, half kbt each. Diatomic rigid rotator होगा तो 5 पार्ट होंगे, half kbt each. And अगर diatomic होगा with vibration तो 7 parts होंगे, half kbt each. अब clear? चलो मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया, अभी आपको दूसरी मेथड से ले जाता हूँ. ये हमारी नोट्स में आ गए वापस. See here. एक तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो मैंने बता दिया आपको, Cl2 and F2 आएगा. फिर दूसरा जो मैंने करेक्शन बताया तो यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री. नाउ फिर से मीनिंग एक बार. Total energy of molecular equilibrium is equally distributed in all possible energy modes. That is the degree of freedom, with each mode having energy half kbt. So energy of each mode is half kbt. Now let us consider 3 different cases. Monatomic molecule है तो क्या होगा? Pay attention.
सी मैं लिख के बता देता हूँ फिर से। मोनोएटमिक मॉलिक्यूल है, so that means helium, neon, argon, xenon. These are the examples. There will be 3 degrees of freedom. मगर कौन से? That will be only translational motion. So 3 degrees of freedom and only translational motion. હમણાં જે બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવ્યો એ ના આવે ધ્યાન રાખો. જે પણ સ્ટુડન્ટ છે, આમ તો અવાજ બી ઓળખાઈ જાય, પણ જે બી સ્ટુડન્ટ છે પ્લીઝ ડોન્ટ રિપીટ ઇટ. યસ. So now see here, ET will be half m vx square plus half m vy square plus half m vz square. बट ये जो हाफ m vx square है, हाफ m vy square है and half m vz square है, that is half kbt as per law of equipartition of energy. So this will be 3 times half kbt. So total translational energy is 3/2 kbt. ये सबको समझ में आया? Now second, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, पर डायटोमिक मॉलिक्यूल में रिजिड रोटेटर है, that means H2, N2F2, Cl2, O2, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो बद्दा मॉलिक्यूल सरखा है, उसमें क्या होगा? तो जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे ट्रांसलेशनल मोशन के, वो तो रहेंगे, प्लस देयर विल बी 2 मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो 2 मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन से आएंगे? दैट विल बी ऑफ रोटेशनल मोशन. दिस विल बी रिटन एज ET तो रहेगा ही, એટલે પહેલાનું જે ET નો પાર્ટ આવ્યો તો આવશે સેમ, but now there will be ER and that will be half I1 omega 1 square plus half I2 omega 2 square. But यहाँ पे previous case की तरह ही we can say कि half I1 omega 1 square will be same as half I2 omega 2 square, that will be equal to half kbt. So we can now write ER will be 2 times half kbt. So finally we can write ER is kbt. And then next step would be E equal to ET plus ER. That will be equal to 3/2 kbt plus kbt. So that is 5/2 kbt. Understood? And third, डायटोमिक मॉलिक्यूल. सी मैं भी लिख रहा हूँ और कुछ लोग आप प्रिपेयर करते वक्त नहीं लिखते, कैसे चलेगा? मैंने 3 बार समझाया तो भी मैं चौथी बार लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले. सो डायटोमिक मॉलिक्यूल विद वाइब्रेशन है, तो उसमें एग्जांपल आएगा HF and HCl. तो उसमें जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कौन से? ट्रांसलेशनल मोशन के, वो तो रहेंगे ही, प्लस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे, that will be rotational motion, plus 2 degrees of freedom आएंगे, that will be vibrational motion. So ये दो तो पहले समझा दिया, अब EV समझना है. So it will be half
ky square plus half m dy by dt square. So this part is potential energy wala part, and this part is kinetic energy wala part. But यहाँ पे भी वही बात है, half ky square and half m divided dt का square दोनों, it is half kbt. So we will get EV equal to 2 times half kbt. So that will be kbt. And therefore, total energy क्या होगा? Total energy will be ET plus ER plus EV. So 3 by 2 kbt plus kbt plus kbt. So that will be 7 by 2 kbt. This completes the entire portion. मैंने इतनी देर में पूरा लिख के आपको समझाया, और अगर आप नहीं लिखते तो यू आर सुपर जीनियस. પછી માર્क्स उठावे तो जाते भगवान. मैं हर साल सिखाता हूँ तो भी इतना आपको लिख के बता रहा हूँ. बोर्ड पे भी 2 बार लिखते हैं, यहाँ पे भी आपको लिख के पूरा बताया. यस प्लीज कंफर्म इट नाउ. हजी कोई नहीं डाउट रही हो तो बोलो. इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही है. गॉड ब्लेस यू. चलो, तो ये पेजेस को मैं रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है लिखा हुआ मेरा. चलेगा ना? લખવું છે તો લખી કાઢો. Be quick. Be quick. कंप्लीटेड. चलो आगे बढ़ते फिर. સર 2 મિનિટ રાખો. લખી કાઢો. પણ એટલા માટે ના લખતા કે આગળ ભણવું ઓછું પડે.
Yes, please. Done, sir. Next page. સર કર્યું. સર હા બોલો. સર આજે લો ઓફ ઇક્વિપાર્ટીશન ઓફ એનર્જી છે એ ખાલી ડાયએટમિક સુધી એપ્લિકેબલ છે, ટ્રાયએટમિક કે ટેટ્રાએટમિક એવું ના હોય. એના માટે કોમન વર્ડ આવે પોલીએટમિક, પણ આપણા કોર્સમાં નથી બેટા. હા હોય પોલીએટમિક માટે બી હોય છે, પણ નથી આપણને. હા સર, પણ સર એ પેલા બોન્ડ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે સ્ટ્રોંગ હોય વીક હા હોય એટલે છે. હું સાચું કહું, પોલીએટમિક નું ડિસ્કશન જ આપણા કોર્સમાં નથી. હા એ સર. વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય એટલે ભાઈ નથી આપતા. હા સર. પણ તમે લોકો ફર્ધર સ્ટડી કરશો ત્યારે આવે કોઈ આગળ.
થર્મોડાયનેમિક્સ માં કોઈને ફર્ધર સ્ટડી કરવું હોય ને, બીએસસી ફિઝિક્સ કરીને એમએસસી ફિઝિક્સ કરે, એમાં થર્મોડાયનેમિક્સ માં ફર્ધર સ્ટડી કરે તો એ વખતે બધું ડિટેલમાં આવે પાછું. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. चलो ये सब हो गया हमारा यहाँ तक. नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मीन फ्री पाथ, और वो होता है तो इसके साथ चैप्टर का थियरी पूरा खत्म हो जाता है. फिर तो न्यूमेरिकल है इसके, और ये लास्ट में थोड़ा सा ये पार्ट है स्पेसिफिकेट वाला, सो वो मैं पहले ले लेता हूँ. ऐसा करता हूँ, इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड. यस प्लीज, ये पार्ट पहले सीखते हैं. वैसे तो हो गया है पर फिर भी सीख लेते हैं. और ये पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा थियरी का, मीन फ्री पाथ. दो छोटे छोटे थियरी टॉपिक्स है, वो खत्म करते हैं. अभी अराउंड 5 o'clock हुआ, एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, बाकी का कल करेंगे. ठीक है. मीन फ्री पाथ. So mean free path of a molecule is the average distance traveled by a molecule between two successive collisions of a molecule with other molecule. एक मॉलिक्यूल बाकी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो कोलाइड होता है, उसमें एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. इज डिनोटेड बाय L bar. And formula is L bar equal to 1 upon n pi d square, considering motion of one molecule and other molecule at rest. But that formula becomes 1 upon root 2 n pi d square, considering molecule motion of all molecules. अब ये कहना क्या चाहते हैं? See, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. Pay attention here. ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस फिल्ड है. अब उसके अंदर एक मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होगा? How will molecule move? Suppose the molecule is moving like this. तो यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल का उसके साथ कोलाइजन होगा तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा. फिर यहाँ पर पहुंचने पर उसका फिर से कोलिजन होगा, फिर उसका पाथ जिगजैग हुआ. फिर यहाँ पहुंचने पर फिर उसका कोलिजन हुआ, फिर इधर पहुंचा. फिर कोलिजन हुआ तो फिर ये इधर आया, फिर कोलिजन हुआ इधर गया, फिर कोलिजन हुआ फिर इधर गया, फिर कोलिजन हुआ इधर गया. सो ये रैंडम मोशन होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है रैंडमली. But after every collision, there will be change in the direction. So then like this, then this, then this, then here, then here, then here, then here, and you know it's keep on changing after every collision. So ऐसे तो यहाँ पे आप काउंट करने जाओ तो ये हुआ पाथ नंबर 1. पे टेंशन कितना ही, ये हुआ पाथ 1 आटलू. फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 7, 8, ऐसे तो गिनते ही जाओ गिनते ही जाओ. तो ऐसे जितने सारे पाथ थे उसका हमको एक वैल्यू चाहिए, दैट इज एवरेज वैल्यू. The other name is mean value, average value or mean value. So we call it as mean free path. ये जितने मैंने ड्रॉ किए लाइन ये सारे फ्री पाथ है, और फ्री पाथ तो बहुत सारे होंगे,
बट हमको मीन फ्री पाथ चाहिए तो मीन फ्री पाथ एक ही होगा, उसका एक ही वैल्यू होगा, मीन है ना, एवरेज है. So mean free path is denoted by L bar. That L bar is given by 1 upon root 2n pi d square. अब रूट 2 कब लिया? जब हमने सारे मॉलिक्यूल का मोशन लिया. अब ये मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए दिखाया. अब ऐसा ही आप दूसरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करो तो दूसरा मॉलिक्यूल का भी ऐसा ही होगा ना. अब हम क्या मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो बाकी के मॉलिक्यूल क्या है? स्टेशनरी के मोशन में है. That is the important assumption. So if you consider motion of one molecule, but you keep other molecules at rest, then the number of collision will be less. आप सोचो, ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, आप रेलवे स्टेशन पर हो और कोई ट्रेन आने वाला है. उस प्लेटफॉर्म पर बाकी सब लोग रुके हुए हैं और आप खाली अकेले चल रहे हो. बाकी બધા લોકો प्लेटफॉर्म पर उभा है, स्टैच्यू है ना, आप अकेले चल रहे हो उसमें, उस प्लेटफॉर्म पर. तो आपके जितने कोलिजन होंगे कंपेयर टू दैट, आप भी मूव कर रहे हो, सब लोग भी मूव कर रहे हैं, तो कोलिजन होंगे. वो किस केस में ज्यादा होंगे, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? बताओ. बस, तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है. आप रूट 2 से जब डिवाइड करते हो तो एक्चुअल नंबर बढ़ जाता है. रूट 2 से डिवाइड करते हो तो नंबर एक्चुअली बढ़ जाएगा यहाँ पे कोलिजन का. सो कोलिजन का नंबर बढ़ जाएगा, यानी मीन फ्री पाथ छोटा हो जाएगा. कोलिजन का नंबर बढ़ जाएगा, सो मीन फ्री पाथ छोटा हो जाएगा. समझ पड़े? कोलिजन વધારે થાય તો मीन फ्री पाथ નાનો આવે. So 1 upon root 2 n pi d square, it is the value of mean free path considering motion of all molecules. Considering motion of all molecules. Now, इसमें n क्या है, d क्या है, वही देखना है. n means number density. Number density of molecule means this, n upon v. So total number upon total volume. And d is diameter of molecule. d is diameter of molecule. ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गई? All of you are clear with this formula? Yes, please. Okay, then we move on to next. देखो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया. और उसमें कभी कभी n का वैल्यू नहीं देते हैं, p is n के वैल्यू डिराइव किया था हमने. यहाँ से शुरू हुआ था. pv is mu rt. pv is n by na rt. So p is n by v, r by na t. याद आया? So p will be n kbt. ये डिराइव हुआ. Confirm it please. तो कभी कभी क्या n नहीं देते डायरेक्टली,
तो P में से फाइंड करने का P अपॉन KBT करके, N is P upon KBT. Understood? This is for numericals. एंड आप यही याद रखो कि आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, √2 वाला, आने याद ही नहीं कराऊं. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कौन सा, क्या? तो फिर से वही बात, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी √2 n pi d square. टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विल बी √2 n pi d square, बट साथ में लिखा है ये v bar into delta L. So it is delta T, delta L नहीं है, delta T है. हाँ. So it will be total number of collisions of molecule with other molecule in time delta T. So देखो ये क्या हुआ, v bar into delta T करते तो ये क्या हुआ, v bar is average velocity into time. Yes. So remember, total number of collisions with other molecule in time delta T will be given by √2 n pi d square v bar delta T. √2 n pi d square v bar delta T, where v bar is average velocity of molecule. And then collision frequency will be simply total number of collisions of molecule with other molecule in time of 1 second. So ये ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन डिराइव हुआ है उसमें डेल्टा टी को 1 सेकंड रख दो, so that will be called collision frequency. मैं ये पूरा लिख के बताता हूँ. चलो अभी इसको रिमूव करते हैं और पूरा लिख के बताता हूँ. So see here, mean free path L bar, it is 1 upon √2 n pi d square. This is number 1. Second, total number of collisions of molecule in time delta T will be given by √2 n pi d square v bar delta T. Third is collision frequency. Collision frequency is short from CF. And what it means is total number of collisions of molecule in time 1 second. So this will be √2 n pi d square v bar. और इसमें अपने टाइम को 1 सेकंड ले लिया. ये 3 फॉर्मूला है और ये 3 फॉर्मूला में d क्या है, d is diameter of molecule. वो नॉर्मली एंगस्ट्रॉम में होता है, तो उसका वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो आपको कन्वर्ट करना. देन n is number density of molecules. और अगर n ना दिया हो और p दिया हो, use n as p upon kBt. If not given, if n is not given, n का वैल्यू डायरेक्टली ना दिया हो, ऐसे केसेस में यूज करना है ये फॉर्मूला. And then v bar is average velocity of molecules. Write it down please. ये लिखो और लिखते हो कोई भी डाउट है तो पूछो.
Return. સર સર બોલો સર ભાઈ. આ થર્ડમાં કોલિઝન ઓફ ફ્રીક્વન્સી જે છે ને સર એમાં જે ફોર્મ્યુલા છે તે √2 પાઈ ડી સ્ક્વેર વી રેઝ ટુ વી બાર છે ના ને ના 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 રૂટ ટુ એન. અરે ભાઈ હા. એન પાઈ ડી સ્ક્વેર. હા એન તો હોય ને ઉપરની ફોર્મ્યુલામાં ખાલી 1 મૂકવાનું. યસ સર જો ઉપરની ફોર્મ્યુલા છે ને એના અંદર 1 મૂકી દેવાનું. चलो और कोई डाउट? સર બોલો. સર આ એન નો મીનિંગ જે છે એવું થાય ને કે એ જેટલા મોલિક્યુલ્સ મતલબ કોલાઇડ થઈ રહ્યું છે એની ડેન્સિટી. ના એવું નહીં. એ ગેસની નંબર ડેન્સિટી, ટોટલ નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ અપોન ટોટલ વોલ્યુમ. કોલાઇડ થાય છે એની ડેન્સિટી નહીં, ટોટલ એ જે ગેસ ફિલઅપ કર્યો છે એની નંબર ડેન્સિટી. ના સર, એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર મોલિક્યુલ હોય એ બીજા બધા મોલિક્યુલ સાથે કોલાઇડ એવું થતું બધું નહીં આવે. એ અંદર જે બી ગેસ ફિલઅપ કર્યો હોય, સપોઝ ઓક્સિજન છે તો ઓક્સિજનની નંબર ડેન્સિટી લેવાની. હા સર. તું વિચારે જેવું નથી. Write down, then there is one fourth formula which I would like to take. हो गया थर्ड. Now fourth. Fourth is relaxation time. Relaxation time means time between any two successive collisions of molecules. Time between any two successive collisions of molecules. That is called relaxation time. Just a minute. So time between any two successive collision of molecules. So that relaxation time is denoted by tau. So tau is 1 upon CF, collision frequency. So it is 1 upon √2 n pi d square v bar. That's the formula. So already जो हमारा थर्ड वैल्यू आया है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, that will be fourth value. Write down please.
Complete it fast. Clear? Return. Then let's take some MCQs जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दे. Yes. સર बोलो. સર ટાઈમ બિટવીન પેલા ટુ સક્સેસિવ કોલિઝન્સ જે છે એનો મતલબ શું થાય? એટલે જે બે કોલિઝન વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ હોય એને મીન ફ્રી પાથ કીધું. તો બે કોલિઝન વચ્ચે જે ટાઈમ લાગ્યો ને રિલેક્સેશન ટાઈમ કીધું. એટલે સર એ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટન્સ હા સર ઓકે. Now next. We start from 24. को भी बाकी रखते हैं, वो थियरी में आएगा. Let us start with this 28 only. मजा उसे. Yes. बोलो. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? चेक करो. मोनोएटमिक है, डायएटमिक है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे है कि अलग अलग है? चेक करो प्लीज. मोनोएटमिक है, डायएटमिक है, डायएटमिक में दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है? तो नहीं हो सकता. कंफ्यूजन है 5 की 7 में. तो क्या होगा? क्या वो O2F2Cl2N2 वाला है कि नहीं? HFHCl जैसा है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले. अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस है तो फिर तो 7 आएगा ना. देन नेक्स्ट, the average kinetic energy of a gas molecule is proportional to क्या? अभी हमने देखा is proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा. याद है? हाफ kBT फॉर एवरी इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो प्रोपोर्शनल टू तो टेम्परेचर हो गया ना. Then next, degree of freedom of inert gases like argon, neon, and then argon, neon और बाद में H लिखा है, वो H नहीं होगा, करेक्शन होगा, H ही होगा. Yes, तो क्या आंसर आएगा? 3. Then next, at moderate temperature the degree of freedom of oxygen are oxygen diatomic, rigid rotator, so 5. Next, option bonus. The length of straight path between two consecutive collision of a gas molecule is called
The length of straight path between two consecutive collision of a molecule is called mean free path. समझ में आ गया सबको? Then next, the volume of definite amount of gas at 3 atmospheric pressure is 12 liter. At constant temperature, what should be pressure so that volume of gas may be reduced to 9 liter? Reduced to 9 liter means देखो P1 is 3 at here. V1 is 12 liter. V2 is 9 liter. P2 is how much? And T is constant. T is constant. Yes. Anybody? Temperature constant है. So Boyle's law. P varies with 1 by V. So P2 by P1 is V1 by V2. So P2 will be P1 into V1 by V2. So this will be 3 atmosphere into 12 liter upon 9 liter. 4 atmosphere. ऐसा आंसर चेक करो. Next. (34) Number of molecules चाहिए. V is 27 meter cube. T is 273 plus 27. That is 300 K. P is 1 atmosphere. That is 1.01 into 10 raised to 5. And number of molecules C N. So वैसे तो आप जानते हो PV is mu RT. PV हमको N. So it is PVNA upon RT. सब वैल्यू रखो, सब MKS में होनी चाहिए वैल्यूज. So pressure is 1.10 into 10 to 5. The volume is 27 into Na 6.02 into 10 to 20 upon R 8.31 into temperature 300. Solve करो और n का वैल्यू लिखे हो. करो confirm please. What is the answer that you are getting?
6.58 into 10⁻26 आंसर आता है, वो ऑप्शन में भी है। अरे वाह, सो बी इज द आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। आज का क्वेश्चन, फाइंड द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल at 27 degrees Celsius. So T equal to 273 plus 27, that is 300 K. Do you want mean translational kinetic energy? Mean translational kinetic energy. Translational. So it is ET. So it is 3/2 kBT. So 3/2. 1.38 into 10⁻⁻23 into 300, and that will be in joule. क्योंकि इसका यूनिट जूल पर केल्विन होता है, मल्टीप्लाई बाय केल्विन हो जाता है, तो केल्विन केल्विन कट हो जाएगा, सो आंसर जूल में आएगा। सॉल्व दिस एंड गिव द आंसर। (6.21 into 10⁻21), दैट मीन बी आंसर आता है। ओके, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बी आंसर आता है। चलो ये आंसर, so I think that will be enough for today. બોલો સર આજે 32 છે એમાં પાછળ આન્સર ફ્રી પાથ આપ્યો છે। શું કહે છે? આજે 32 છે ને એમાં પાછળ આન્સર ફ્રી પાથ આપ્યો છે। બેટા ખાતે જ આવે ને, એક જ બે કોન્સિક્યુટિવ કોલિઝન વચ્ચેનો એક પાથ ગણે તો ફ્રી પાથ આવે, અને બધા ફ્રી પાથની તો એવરેજ કન્સિડર કર તો એ શું આવે? મીન ફ્રી પાથ। અત્યારે આપણે ખાલી એક સ્ટ્રેટ પાથ ગણ્યો હોય તે ફ્રી પાથ જ આવે ને, ના સમજ પડી? આવા બધા ફ્રી પાથ પરથી એક વેલ્યુ લઈએ તો એ શું થાય? આ બધા ફ્રી પાથ છે, એના પરથી આપણે એક વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ, સિંગલ વેલ્યુ, સો ધેટ વુડ બી મીન ફ્રી પાથ। પણ આ તો એલ ને, L1, L2, L3, L4, L5, L6 એવું થાય ને, ક્લિયર? એટલે ફ્રી પાથ આવે। પણ યુઝ્યુઅલી છે ને, તમને જ્યારે ટેસ્ટમાં પૂછાશે ને ત્યારે આ બે ઓપ્શન ને આવું કન્ફ્યુઝન થાય એવું હશે જ નહીં। ફ્રી પાથ ને મીન ફ્રી પાથ બે ઓપ્શનમાં ના અપાય, ગોટ ઇટ? પણ જો બે હોય તો ખરેખર સિલેક્ટ ફ્રી પાથ થાય, because you are considering one path between two collision. એવા હજારો પાથની એવરેજ લઈએ તો it is mean free path. Fine. चलो क्लियर? जितना हो गया सब कुछ समझ में आ गया? Yes, Yatesha, you can stop recording and can end up the